Yes, you can rejoin, Ashita. Okay. So disorders of the testosterone. So disorders of testosterone में eunuchidism. Okay, eunuchidism is what it is due to the decreased secretion of testosterone. अगर testosterone कम secrete हो गया तो what is the main function of testosterone? It brings about development of secondary sexual characters in males. Okay, so there will be no proper development of the secondary sexual characters in male. So underdeveloped and non-functional secondary sex organs will be डेवलप. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं पता है आपको? एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, देन ये समाइनल वेसिकल्स, कॉपर्स ग्लैंड. ओके, so all these which are there, these are the accessory sex organs. Okay, accessory sex glands जो है वो बराबर से डेवलप नहीं होंगे. ठीक है, as well as there will be no proper development of secondary sexual characters in males. Okay, then gynecomastia. Gynecomastia में क्या होता है? Development of the breast tissue in males. Okay, so males में there is development of the breast tissue, means breast becomes fatty in males. Feminine character gets developed. ठीक है, so ये बात है. Then we'll talk about the androgens functions. Okay, so what are the different functions of the androgens? ये भी additional functions है in addition to the development of secondary sexual characters, spermatogenesis, okay, sexual desire. ये सब हम लोग ने main functions भी देख लिए, and in addition to that we have also discussed about the additional functions of testosterone and androgenic corticoids. Okay, so क्या है? Development and maturation. It brings about development and maturation and functions of the male accessory sex organs. Okay, so male accessory sex organs such as एपिडिडाइमिस जो कि मैंने बोला अभी, वास डिफरेंस, समाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा. ओके, उसका माल फंक्शनिंग होगा if there is less secretion of testosterone or and androgenic corticoids, and if proper amount is there, there will be proper spermatogenesis followed by proper conduction of the sperms in the female genital tract. ओके, देन एंड्रोजन्स जो है वो सीएनएस के ऊपर भी एक्ट होते हैं, एंड इट ब्रिंग्स अबाउट इन्फ्लुएंस. ओके, मेल सेक्सुअल बिहेवियर, दैट इज सेक्सुअल डिजायर डेवलप करने के लिए ये एंड्रोजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजेनिक कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द जोना रेटिकुलाटा सेल्स. ओके, देन these hormones produce anabolic or synthetic effect on the proteins and carbohydrate metabolism, means proteinogenesis and gluconeogenesis. Gluconeogenesis, then glucose formation, okay, glycogen formation, ये stimulate करते. They induces all these processes, gluconeogenesis, glycogenesis, ठीक है, even formation of different proteins.
बिकॉज मस्क्यूलर बॉडी कैसे रहता है, फिजिक्स, बॉडी फिजिक्स इज क्वाइट गुड इन मेल्स. ओके, गुड मस्क्यूलेचर. सो गुड मस्क्यूलेचर के लिए, डेवलप होने के लिए ज्यादा प्रोटीन्स बनने चाहिए बॉडी में, एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. नाउ हाइपोगोनाडिज्म. हाइपोगोनाडिज्म का मतलब क्या है? लेस प्रोडक्शन ऑफ द sex hormones because of less functioning of gonads. ठीक है. So inadequate functioning of the gonads. जितना function normal functioning है उतना वो normal functioning नहीं करेगा. So definitely there will be less secretion of the sex hormones. ठीक है. So hypogonadism. Hypogonadism में क्या होता है? There is defect or injury of the हाइपोगोनाडिज्म किसकी वजह से हो सकता है? डिफेक्ट और इंजरी टू द हाइपोथैलेमस. ओके, सो हाइपोथैलेमस का इंजरी हुआ नहीं तो वो बराबर से फंक्शन नहीं कर रहा है. सो रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन्स will not be produced. Releasing hormones का deficiency हुआ तो there will be deficiency of the FSH and LH, and which will further lead to deficiency of estrogen, progesterone and testosterone depending upon which type of sex gonad it is. ठीक है. Then pituitary gland. Pituitary gland ये तो बोला मैंने, deficiency of FSH and LH. अभी मेल हाइपोगोनाडिज्म. मेल हाइपोगोनाडिज्म मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ malfunctioning of the androgens. Okay, deficiency of the androgens, that is testosterone or else sex corticoids or gonadocorticoids, उसका deficiency हो गया. Then ICSH का deficiency हुआ तो definitely it will affect the functioning of लिडिक सेल्स. ठीक है. ICSH अगर कम प्रोड्यूस हुआ तो लिडिक सेल्स विल नॉट प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन. समझ में आया? सो डेफिशिएंसी ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन और हाइपो फंक्शनिंग ऑफ द सर्टोली सेल्स विल आल्सो ऑकर. सो स्पर्मेटोजेनेसिस भी कम हो जाएगा, as well as it will affect the functioning of the Sertoli cells. Okay, so Sertoli cells, what is the main function of Sertoli cells? Those are the nurse cells which will nourish the developing sperms. Okay, in the uterus. Sorry, in the testis. Okay, so testis में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है बराबर. दैट इज स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड. सो ये जो डेवलपमेंट होता है, दैट डेवलपमेंट के बाद जो फाइनल टेल डेवलप होता है एंड स्पर्म्स आर फॉर्म. The maturation of the sperms is because of the Sertoli cells or the nurse cells. ठीक है. So Sertoli cells or the nurse cells which are there, this will bring about maturation of the sperms. Okay, एक तो टेस्टोस्टेरॉन कम सिक्रेट होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन जितना होना चाहिए मिलियंस में होता है ना स्पर्म्स, बराबर. In one ejaculate also there is much more quantity of sperms. So sperms which will be produced will be deficient. Very less amount of sperms will be produced, hundreds or thousands में ही produce होंगे, which will lead to infertility. Okay, then secondly Sertoli cells function नहीं करेंगे बराबर से, so there will be no maturation of the sperms properly, and sperms जो बनेंगे those will not be viable sperms. Because अगर tail lashing tail बराबर नहीं बना तो definitely it is going to affect the movement of the sperms. Okay, and as you all know very well, sperms has to move against the gravitational force when semen is released in the female genital tract. Okay, from vagina it enters in the fallopian tube. तो उल्टा जाने के लिए फिर बहुत ज्यादा लैश करना पड़ेगा उसको, फ्लैजेला मूव करना पड़ेगा फ्लैजेला. एंड इफ फ्लैजेला इज नॉट प्रॉपरली डेवलप they will die and they will get destroyed and discarded from the vagina. Okay, समझ में आया? So ये होता है उसके कारण. Then such males
do not develop secondary sexual characters and musculature. Why? Because Leydig cells will not produce sufficient amount of androgen, that is testosterone here. ठीक है? So Leydig cells क्यों नहीं function कर रहे हैं बराबर से? Because of deficiency of ICSH, which is produced by the pituitary gland. समझ में आया? So ICSH ही that is interstitial cell stimulating hormone ही production उसका बराबर नहीं है, कम है, तो there will be less production of testosterone because ICSH has effect over the Leydig cells. Okay, now female hypogonadism. Female hypogonadism in females, which is the sex organ pair of ovaries. Ovaries functioning will get affected. When it will get affected, either if there is deficiency of FSH or LH, or else there is tumor formation in the ovaries. Barabar, got it? At that time, there will be deficiency of estrogen followed by progesterone. Okay, got it? So female sex hormones of the pituitary gonads, that is FSH or LH or both का deficiency हुआ, तो it will affect the follicular formation and there will be no on-time ovulation and it will result into irregular menses, irregular menstrual cycle. ओके और FSH LH अगर बराबर से नहीं सिक्रेट हुआ तो ऑन टाइम फॉलिकल्स तो बनेंगे ही नहीं, तो ऑन टाइम ओव्यूलेशन नहीं होगा बराबर. ऑन टाइम ओव्यूलेशन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज फॉलिकल्स ऑन टाइम नहीं बन रहे, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो रहा है. सो देयर विल बी नो ग्राफाइन फॉलिकल फॉर्मेशन बिफोर 14th डे. ठीक है, 14th डे इज ओव्यूलेशन डे. आई बात समझ में? So it results in lack of development of secondary sexual characters. Okay, secondary sexual characters will not be properly developed in females because of deficiency of these hormones. Because ultimately FSH to follicular development karega ovaries mein, it is going to lead to the secretion of estrogen and estrogen hormone and then progesterone hormone will be produced by the corpus luteum. I have explained you that. Okay, so corpus luteum be late form होगा तो late progesterone का concentration बढ़ेगा blood में. So estrogen, progesterone, these are the sex hormones which will be very much important for development of secondary sexual characters, especially estrogen. Okay. So all of you understood hypogonadism means less secretion of the pituitary hormones or due to injury to the hypothalamus or due to malfunctioning of the testis and ovary due to tumor development. ठीक है, got it? ऐसे होता है. So damage to the sex organs may also lead to hypogonadism. Now next is hyper secretion कब हो सकता है? ट्यूमर फॉर्मेशन, आई एम सॉरी, ट्यूमर अगर फॉर्म हुआ है तो वो ज्यादा फॉर्म फंक्शन करने लगेगा ना, सो इट विल लीड टू हाइपर सिक्रेशन एट दैट टाइम. ट्यूमरस कंडीशन हुआ तो हाइपो सिक्रेशन नहीं होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा. ठीक है, so injury to the hypothalamus or else due to malfunctioning injury to the or else damage to the testis and ovaries may lead to hypogonadism. ठीक है, got it? Yeah. Then precocious puberty. Precocious puberty. Precocious puberty में क्या होता है? Early maturation of testis and ovaries. Why this will happen? Because of faster development of testis and ovaries. So the person reaches puberty very soon. Okay, so production of sperms in boys before the age of 10 years. Okay, so 10 साल का होने से पहले ही वो बच्चे में sperm form होने लगता है testis में. ठीक है, spermatogenesis. So it's too early. Similar way here,
by 9-year-old girl, ovary starts production of ovum, that is secondary oocyte, followed by development of mature ovum. ठीक है, so sexual precocity बोलते हैं, precocity, sexual precocity, understood? Precocity in the sense excess functioning, ज़्यादा functioning, hyper production of the sex hormones because of much more development of the much more development of the testis and ovaries. Now, sexual precocity is due to excess secretion of the sex hormones from adrenal cortex. अभी adrenal cortex क्यों बोला है? Because I told you adrenal cortex has zona reticulata which produces gonadocorticoids. Gonadocorticoids. ठीक है? 1 minute. Shita and ठीक है, so adrenal cortex, testis, ovaries और from the extragonadal tumors. Okay, extragonadal tumors means आजू बाजू के areas जो है, means peritoneum का tumor हो गया, to which the ovary is attached or else testis is attached. ठीक है, it may lead to malfunctioning of the gonads also. आजू बाजू में cancerous cells रहेंगे तो. ठीक है, so secretion of the, there is much more secretion of the adrenal cortex, testis, ovary or from the extragonadal tumors. Okay, as well as tumor of the ovaries and testis. अभी sexual pseudo precocity in boys. Okay, pseudo precocity में क्या होता है? What is the cause for this? मीन्स जल्दी ज्यादा मैच्योरिटी आता है बॉयज में. ओके, सो जल्दी ज्यादा मैच्योरिटी आएगा तो डेफिनेटली देयर विल बी मच मोर स्पर्म प्रोडक्शन एट अर्ली एज. ठीक है, सो इसीलिए उसको बोला है सूडो प्रिकॉसिटी. जो एज में प्यूबर्टी आना चाहिए उससे पहले ही प्यूबर्टी आता है. ओके, सो इट कॉज इट, व्हाट इज द कॉज फॉर दैट? ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस एंड एड्रिनल ग्लैंड. ये अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया. सो व्हाट इज द इफेक्ट ओवर द बॉडी? टेस्टोस्टेरोन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो जल्दी मुस्टैच, बियर्ड डेवलपमेंट, एक्चुअल हेयर, प्यूबिक हेयर, these will be developed. ठीक है, then enlarged penis, then early musculature of the body. ठीक है, then fast body growth, जो अभी बोला मैंने, बियर्ड, मुस्टैच डेवलपमेंट, एक्चुअल हेयर, प्यूबिक हेयर, गुड मस्कुलेचर, all this. समझ रहा है? सेक्सुअल सूडो प्रिकॉसिटी ऑफ गर्ल्स, उसमें भी रीजन क्या रहेगा? इधर रीजन मैंने क्या बोला था? ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस. यहाँ पे क्या रहेगा? फीमेल्स में ट्यूमर ऑफ द ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो. हाँ, अभी 40 मिनट्स बाकी है. यू हैव टू क्लिक ऑन द सेम लिंक. ठीक है, टू री एंटर इन द मीटिंग. सेम लिंक से देखते होता है क्या, नहीं तो फिर मैं दूसरा लिंक शेयर करूंगी. पहले आप देखो वो क्लिक करके सेम लिंक पे होता है क्या री एंटर. ड्यू टू ट्यूमर ऑफ ओवरी और एड्रिनल ग्लैंड, that is the cause. Then what is the effect over the body of the girls? If there is maximum or else much more secretion of the sex hormones, secondary sexual characters जल्दी develop होंगी. ठीक है, that is breast development, then pubic hair, actual hair,
Okay, high pitch voice, all this. So, but maturation and ovulation nahi hoga. Remember this. Ovulation of the ova do not occur at that time. Still, follicles yet to be developed properly. Graphene follicle on time form nahi hoga. Only follicular develop हो रहे हैं धीरे धीरे. But ये secondary sexual characters develop हो जाएंगे जल्दी. ठीक है? So this is all about the sexual precocity. So we have finished with the ovaries, testis, as well as two hormones of the pituitary gland, that is FSH and LH. Okay, so pituitary gland के कौन-कौन से hormones हम लोग ने study किए अभी तक? TSH hormone, growth hormone, बराबर? उसके बाद में parathormone we have studied. और FSH and LH, बराबर? So we finish with the anterior lobe hormones of pituitary, right? So अभी दूसरे glands देखते हैं, endocrine glands. Rest all endocrine glands will be learning now. Along with that, when we were learning about the functions of LH, FSH, TSH, okay, then ACTH, adrenal gland भी हम लोग ने study किया, बराबर? So when we were learning about the hormones of pituitary, we have also learned about the details of that particular gland, origin, location, structure, and function, followed by disorders related to that particular gland. Okay. और अगर क्वेश्चन आया डिस्क्राइब हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, सो हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जब भी आप डिस्क्राइब करोगे तो वो 6 हॉर्मोन्स का काम क्या है वो आप बताओगे. यू आर नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई ऑल दीज डिटेल्स देयर. ठीक है. टीएसएच का फंक्शन क्या है, वो कैसे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, दैट एवरीथिंग यू विल बी एक्सप्लेनिंग. देन एफएसएच क्या करता है, एलएच क्या करता है ओवरीज के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर. ठीक है. यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई देयर द होल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, टेस्टिस एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी ग्लैंड. ओके, समझ में आया? सो क्वेश्चन रीड करके आंसर देना है. So now next file I'll open. So now we'll do pineal gland. Okay, अभी तक सबको समझा है? कुछ डाउट बोलिए. What happened to you all? Okay, now pineal gland. Pineal gland, where it is located? Any guesses? आपको पता है हाइपोथैलेमस को
नीचे की तरफ, what is hypothalamus? It is the floor of diencephalon, right? Hypothalamus is having one gland which is attached by stalk. That gland is which gland? Pituitary gland. Okay. Yeah, Shita, I'll just get back to you afterwards regarding this. Okay. पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। वैसे ही अभी डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन का एक पार्ट क्या है? फोर ब्रेन, बराबर। सॉरी, डायनसेफेलॉन इज द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। सो डायनसेफेलॉन का फ्लोर को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। एंड रूफ को क्या बोलते हैं? एपीथैलेमस, ठीक है। सो एपीथैलेमस, टू द एपीथैलेमस दिस ग्लैंड इज अटैच्ड, दैट इज पिनियल ग्लैंड। ओके। pineal gland, earlier it was also known as third eye. Okay, third eye बोला था उसको। थर्ड आई, ओके। थर्ड आई क्यों बोला है? बिकॉज उसके सेंटर में वेनेवर उसका लोकेशन आप देखोगे तो वो बहुत ही डीपली लोकेटेड है इन द हेड रीजन। ओके, और वो भी सेंटर में है। तो यहाँ पे साइड में हम लोग की दो ये जो आंख है और बीच में ये ग्लैंड रहता है, दैट इज इनसाइड डीपली लोकेटेड। ओके, इन द मिडल। सो फोरहेड के सेंटर में उसका लोकेशन अगर आप ट्रैक करोगे तो फोरहेड के सेंटर के लाइन में ही वो आपको मिलेगा, द स्पिनियल ग्लैंड। इसीलिए उसको थर्ड आई बोला था, ठीक है। बट आई क्यों? और बिकॉज वो लाइट सेंसिटिव ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड। ओके, सो इट बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग डार्क, इनएक्टिव ड्यूरिंग लाइट, whenever there is much more light. ओके, और डार्कनेस जब रहता है तभी वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इट बिकम्स एक्टिव ड्यूरिंग डार्कनेस। समझ में आया? Pineal gland. What is the function of the pineal gland now? Pineal gland regulates 24 hours rhythm of our body. Okay, means day and night cycle, sleep and wake cycle वो देखता है सब, right? So sleep and wake cycle means, as I told you, when we sleep, there is inactiveness of the many glands of our body. Okay, so thyroid gland, parathyroid gland, pituitary gland, ये उसका functioning inhibit करता है pineal gland during darkness. Okay, and it induces स्लीपीनेस। ओके, इसीलिए अपने को नींद आता है, बिकॉज ये सब जो मेन ग्लैंड्स रहते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं टू सम एक्सटेंट। ओके, सो इट इनहिबिट्स द फंक्शनिंग ऑफ दीज ऑल मेन ग्लैंड्स, ठीक है। सो स्लीप एंड वेक साइकिल, इट इंड्यूसेस स्लीप as it becomes active during darkness, and whenever there is light, this all glands will get activated, more activated, and they will function efficiently.